मैं अभी आपको प्रिपरेशन बताऊंगी विनियर्स के बारे में एंड फॉलोड बाय अदर क्राउन्स। सो विनियर्स में प्रीटी मच ये हमारा नंबर 9 हम कर रहे हैं। आप लोग में क्या बोलते हैं अपर सेंट्रल इंसाइजर नंबर 1 5 मिलीमीटर की थिकनेस होती है। जनरली हम डेप्थ कट्स करके फिर करते हैं। सो I'll start. I normally try to do veneers में generally you don't break the contact, okay? So I just go. I normally do a depth cut. So आपको burr की वो पता होनी चाहिए। आपको नज़र आ रहा है? Yes. Okay. तो मैं incisal edge को point I drop my burr in like that, and generally I think this is 0.5 millimeters. So I'll do that, and then I will level it off. मेरा वो गॉगल्स भी वो हो। Okay. So I will level this off for my incisal clearance like that. I'm sorry. Once that is done, then I'll go to the facial. Okay. Or facial में pretty much you have to bevel it. And who said कि it's super gingival, right? So you do not break the contact, correct? So अगर आप 0.3 मिलीमीटर्स तो बहुत कम होते हैं वहाँ पे, मगर 0.3 मिलीमीटर्स के भी बनते हैं, बट जनरली यू आर सेफ अगर आप 0.5 मिलीमीटर्स जा रहे हैं। 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा विनियर में ज़रूरत नहीं होती है। और विनियर ऑफ कोर्स आई मीन यू ओनली डूइंग इट अगर कैविटी एक्सेट्रा वगैरह है और टूथ कॉम्प्रोमाइज है तो देन यू शुड डू आइदर एन ईमैक्स क्राउन, राइट? विनियर तो बस वो होता है कि अगर पेशेंट के स्पेस हो, दांत हेल्दी है हो, राइट? तो यू विल नॉट रियली डू फुल रिडक्शन, यू विल जस्ट एंड यू क्रिएट दैट लिटिल। आपको नज़र आ रहा है जो मैंने इसका वो फोकस कर दें, ये फोकस में रखें। ये हम मॉडल रोटेट भी करा देंगे, यू कैन सी विद योर ठीक है ना? ये देखिए, विनियर इज प्रॉब्ली द मोस्ट इजीएस्ट प्रेप। उसमें कुछ नहीं करना होता है। ऑफ कोर्स प्रेप शुड बी स्मूथ एंड नाइस। और आप लोग कैसे अपनी प्रेप स्मूथ करते हैं? व्हाट डू यू डू? ये तो कोर्स बर्ड है, उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? व्हाट डू यू यूज? फिनिशिंग बर्ड्स जो इसके ऊपर रेड होता है ना, रेड है आपके पास? अगर रेड हो तो मुझे रेड दे दें। इमरान देखना उसमें तो रेड है, मैं मंगा लेते हैं ये। तो मैं हमेशा रेड यूज़ करती हूँ, कभी कभी मैं वाइट स्टोन भी जाती हूँ, उससे सारे लाइन एंगल्स और सब वो स्मूथ हो जाते हैं। ऑलवेज ऑलवेज अब मैं अपने मेन डेप्थ करके, अपना मेन प्रेप करके मैं हमेशा वो रेड के जाती हूँ ऊपर टू रिफाइन इट। जनरली आप लोग को भी अपने बर्स की डेप्थ और साइज तो पता होगी, मुझे इसका नहीं पता, मगर मुझे अंदाज़ा है कि दिस इज़ इनफ फॉर द विनियर। विनियर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अपनी मिडल का भूल जाते हैं, लाइक दिस एरिया राइट हियर we forget this to prep, so make sure you go back up here. यहाँ पे veneers की market है. Do people come for it? Yeah. A lot of people want veneers. 3 to 3. Oh really? और फिर आप that's the best way because then you don't have to worry about matching anything. तो आप लोग ऐसे ही prep करते हैं या मैं कुछ अलग कर रही हूँ? Okay, round bird. And do you take it on the lingual? You try to cover the lingual, yeah. It depends. You don't always have to. Right, it just depends if you want to. आपको नजर आ रहा है? Oh my God. Sorry. So you can see this little
Change the burr. Yes, yes. नया burr निकाल दो. So you can see my little prep right here. और इसके ऊपर हम फिर I go back with the red to polish it. Red अभी लेके आ रही हूँ polish. उसमें really you don't have to do much. Most of it depends on the lab. The veneers you're not really doing much. Just make sure you don't break this contact. Veneers में you don't have to break the contact at all. You just have to develop a little shell that the veneer will blend on top. ये तो मैं थोड़ा उसको और डिटेल कर रही हूँ और स्मूथ कर रही हूँ, but then normally I do this with my fine diamond. So is this what you guys do too? ऐसा ही बनाते हैं? Perhaps उसमें कोई questions हैं? Any question you want to ask regarding veneer prep? तुम लोग साथ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. If you are not following, if you have any problem, you can ask the question. Make sure you get the middle clearance enough because वो हमेशा हम भूल जाते हैं. आगे जो प्लॉट को मैं यहाँ कर रही हूँ, तुम लोगों के लिए will be useful in your clinical practice. That you must know. तो ये मेरा contact break हो गया and I use a thin diamond for that. अगर हम इसको ब्लू कर दें तो उसको तो देर भी मोर विजिबल नहीं नजर आ रहा कुछ उनको भी? नहीं, वो उसमें वाइटर है ना स्ट्रक्चर. That's why I think they are not able. आ जाएगा लेकिन. फिर मैं ये burr use करूँगी. मुझे पता है ये around 1.5 to 2 millimeters है. वो साउंड नहीं आ रही सही, तुम्हारी गूंज रही है सही. तो ये मैं लेके then I do my depth cuts. This depth cuts are important. आपको नजर आ रहा है? So I'm gonna, मुझे क्या करती हूँ ना, कौन से दबाती हूँ तो I'll take this on my cusp tip and I'm going all the way down. Do you see me? I'm in. नजर नहीं आ रहा उनको कुछ भी. आ रहा है? अच्छा. और फिर ये मैं all the way अंदर जाऊँगी. I go all the way in. मुझे पता है कि मैंने at least 2 millimeters तो किया ही है. In. सारे मैंने अपने cusp tips पे किया. And then I will just flatten it out and I will follow the anatomy. Okay, so you saw, you know this is 2 millimeters at least, right? फिर ये I think इससे बन जाएगा chamfer देखते हैं. Then I start on my facial. Always create the functional cusp. Functional cusp and of course breaking your cervical margin are the keys to your. For zirconia, so you're going to give more than 2.2 millimeters. 1.75 भी कर लें. 2. Yes, but I've already. Correct. 2.2. हाँ. I've already reduced the tips. Correct. Functional caps, you're just making sure that वो आपको lab भी अच्छा बना के देगा. अगर आप इसको छोड़ देंगे ना, so lab से भी properly वो build up नहीं होगा cusp. And then after this, I'm kind of done here, and I will go ahead and just refine everything, and take away any of the sharp angles. तो फिर मैं diamond के पास जाके, I use my red one. ये थोड़ा वो है pointy मगर it's okay. मैं वही use करती हूँ diamond भी red which I use. I'm changing my burr here, but I don't have a choice. Do you guys do anything different or same? Almost the same, right? आप लोग occlusal करते हो पहले. हम लोग हमेशा interproximal सिखाते हैं steps में. हाँ हर
So that's it. This is done. Very nice. Looks good? Yeah, very nice. I mean, मुझे जो नज़र आया मैंने वो कर दिया. वहाँ पे मेरे पास नई चीज़ें होती हैं, of course. But it has to be smooth. You see that? Yeah. Bas, this is done. And you know you have 2 millimeter clearance. And you also. Okay, sure. Some other people cannot hear you properly. Okay. Now can you hear me? Can you guys hear me now? आवाज आ रही है तुम लोगों को जो पीछे हैं खास तौर पे? Thank you. तो मैं हमेशा पर एक्सप्लोरर लेके you have to walk your explorer all the way around to make sure you have a margin. ठीक है? और ये at least 1.75 2 millimeters तक होना चाहिए. Even the margin. It's kind of a broad shoulder for zirconia because you're packing a zirconia. If you're doing the monolithic जो कह रहे हैं full core जो zirconia होता है. But still, it's not bad. I mean, it's pretty retentive prep, I would say. And giving the having enough room is I think is a prerequisite for the digital. Yes. It's a little bit more on the heavier side. So it can capture it. It can capture it. तो मैंने ये भी कहा, don't have the depth cuts. आप उसको 0.5 या 1 millimeter पे छोड़ दोगे. You will think you have enough, but you don't. So you just flatten it and you follow the anatomy. And always keep your finger rest on your thing, on the tooth. It will give you a good. So you see depth cut यहाँ है, देखा? So I still have to flatten it like this. Wherever you know you have 2 millimeters at least. आप लोग depth cuts करते हो? Yeah. So that makes sure I still do it after so many years and after cutting thousands of crowns. I still do depth cuts because how else do I know? अब मुझे ये दूसरा वाला एक लगा दें. वो और भी हैं. So this is for. बर्ड्स कहाँ गए? ये और कौन है जो बर्ड्स निकाल के थे? Okay, ये PFM करेंगे तो फेशियल पे क्या आएगा? शोल्डर और लिंगुअल पे? Correct. And the shoulder will extend all the way to the. You are making shoulder. I'm making shoulder. हमने नोटिस किया कि हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग में हम लोग इंटरप्रॉक्सिमल पहले करते हैं, आप लोग ओक्लूजल पहले करते हैं. तो हमें सिखाते हैं कि हमेशा इंटरप्रॉक्सिमल, ब्रेक द इंटरप्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट फर्स्ट. इंटरप्रॉक्सिमल में मेक श्योर यू ब्रेक द सर्विकल कॉन्टैक्ट. बहुत लोग सर्विकल नहीं ब्रेक करते, दे ओनली ब्रेक द मिडल कॉन्टैक्ट. यू हैव टू ब्रेक द सर्विकल ऑलवेज 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 एंड ऑलवेज. योर क्राउन्स विल नॉट सीट इफ यू डोंट ब्रेक द सर्विकल. So I'm breaking my contact यहाँ पे slowly. It's a little bit harder on these teeth, but so when I say cervical, you should be able to see light. You see this? You have to break this. This is not good. This is not done. This is done. Can you guys see the difference? So I still have to break this cervical contact right here. Even though you feel your middle contact is broken, your cervical contact is not broken yet. So I'm gonna go and. Now it's broken. Actually now also it's not broken. You still have to go a little bit. But you're right, you have to stay away from your gingiva. Sometimes you can take a little strip and do it. After that, what's the step, guys? After we break the contact? We go do a depth grooves and we take down. हम Emax कर रहे हैं, so we're going to give it at least 2 millimeters, right? So we go down depth grooves. This is 2 millimeters, I'm all the way in, right? Right? And then I'll level it off. And then I will start with my margins. So I'm generally, you see, I'm using mainly this burr. This is my favorite too. You can do champers, you can do shoulders with it. And then, अब मुझे किसी ने depth cuts पूछा था. I will also give my depth cuts on the facial.
Okay, now we're going to do this. आप लोग अपने margins on the anterior super gingival लगते हैं या sub gingival? Supra, exactly. Only, and what I do normally is I prep it. अभी मैं उसको supra ही रखूँगी. फिर जब मैं अपना red diamond लेती हूँ ना, तो उससे मैं ले जाके I'll go sub during my refinement, because you don't need to go too sub, right? Just enough that when the patient has recession, you are still okay with your crown and they don't come back complaining about your crown. Am I doing anything different than you guys or the same? यहाँ पे सबसे ज़्यादा difficult मुझे anterior में होता है उसका lingual, correct? और देखिए मैं lingual थोड़ा उसको हाँ वो not the lingual margin, it's the lingual cingulum. आपका लैब हमेशा कंप्लेन करेगा that you don't have enough. So मैं क्या करती हूँ? I have a football diamond which I also sink in my lingual, just like that. Because यहाँ पे आप I think हमें हमेशा छोड़ देते हैं because we are afraid of the pulp. वो यही होता है ना pulp on. Yeah, can you give me? Yeah, there's no reason to do anything. Patients will sometimes say, "Oh, मुझे margin feel हो रहा है." You'll get used to it, and they do get used to it, you know. और फिर मैं इस time पे I'll go and drop my margin on the facial. How can we reduce the proclination in the anterior run if you want to make that? You can't. You have to reduce. So you have to always look from here. यहाँ पे still थोड़ा मुझे काम बाकी है. But I switch to my fine diamond at this point. मैं aggressive जो मुझे करना होता है मैं कर लेती हूँ. And then I go make my final touches. I have done depth cuts here too, but yes, you have to do enough here. Anteriors are also tucky because your pulp horns are sitting right there, you see? And then patients can have a little sensitivity also. So. Anterior का तो हम endo के बाद ही कितनी deep cutting करेंगे ना? Not always. Not always, it's not necessary. When the patient gets a little bit older, the younger patient is more dangerous. Older में तो यार, older we can sensitivity. But still, if you do this much, you should not be in the pulp, I promise you. कल में काफ़ी अच्छा उन्होंने वो किया कि you do not need the root canal in this sort of cutting. इससे ज़्यादा अगर आप कर लो तो yes. But this is enough. I mean, इसमें तो कोई पल्प नहीं जाएगा. इसके लिए मैंने राइट क्योंकि 2 mm का हमने यूज़ किया ना तो 2 mm की नहीं मिली है 2 ml से ज़्यादा तो you don't even need. If you're doing more than 2 ml तो फिर तो पता नहीं. You shouldn't do it, right? बस now I'm just rounding off my edges and I'm kind of done here. और आपको अगर थोड़ा उसका proclination ऐसे पूछ रही हैं, just go back and smooth it out there. Looks good, right? Not bad. Make sure you don't have undercuts. How do you check for undercuts? You look down and you should be able to see everything. यहाँ पे I cannot see a little bit here, so I'm gonna. Good? Would you do anything different? Are you done? You're done. Looks nice, right? Okay. आप ये ये बे हाँ ये पर क्या हमें yes the way it's designed is going to give you also your central question for you doctor yes this is the occlusal reduction bar ऊपर bar करें bar दिखा नहीं आ रहा this is the occlusal reduction ये इतना अच्छा बर है कि इन्हें डिजाइन ऐसे किया है this is the occlusion reduction bar which we usually use in our clinic rugby style है ना? We also call it rugby bar ना? It has a
यहाँ पर जो हम लेते हैं ना, एक ऑक्लूजन रिडक्शन बर के नाम से लेते हैं, जो सप्लायर से लेते हैं, तो हम भी नॉर्मली ऐसे नंबर बता देना इसका। ये यूज़ करते हैं। इट इज TX11। ये इसका ये हाँ, तो बस इसका ये है कि सेंट्रल ग्रूव भी साफ होता है। इट्स अ वेरी फास्ट, इट्स अ ग्रेट burr to do your, यूजुअली यूज दिस बर इन आवर क्लिनिकल। it's great, it's a very good burr. If you can use this for your, ऑटोमेटिकली थोड़ी सी जो है ना उसको आप contain डेप्थ, कर देते हैं। हाँ, डेप्थ cuts करके use this instead of what I did was much more harder.